Hello everyone, my name is Ramakant Sahu and welcome again in day 2 video. So in this video we will cover about the introduction to Python and data science. So why we need Python and data science in our AI journey. So why this topic is important? So before learning artificial intelligence AI, machine learning engineering like ML or generative AI. So we must understand two foundations. What are these? First one is Python. So what is Python? Python is the language we use to talk to machine. So Python के द्वारा अपन मशीन से बात कर सकते हैं, लाइक मशीन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और मशीन फिर वो अपना जो इंस्ट्रक्शन है उसके बेस पे वो परफॉर्म करेगी. So Python is needed for these. And what is second one? Second one is data science. So what is data science? Data science is the process of turning raw data into decisions. So data science का basically यूज़ किया जाता है raw data को insightful data में convert करने के लिए. And without Python plus data science, we can't imagine like AI engineer cannot exist. So these are the foundation of the AI engineer, because if we don't know, if we don't understand these concepts, then AI engineer will not exist. So this is the thing. So now let's move to the our topic. What is Python? So Python, what is the definition of Python? Python is a high level interpreted जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट इज़ ईजी टू रीड, बहुत ही ईजी है रीड करने के लिए, ईजी टू राइट, लिखने में भी बहुत ही आसान, एंड वेरी पावरफुल. पावरफुल क्यों? क्योंकि पाइथन के पास एक ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट है, जो कि लाइक बने बनाई लाइब्रेरी है, जो कि अपन को डेटा का इंसाइट इजीली मिल जाता है उनका यूज़ करके. वो अपन सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, अपन को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता प्रोग्राम स्क्रैच से. बनाए बनाए मॉड्यूल मिलते हैं जो कि यूज़ करके अपन अपना डेटा साइट जो भी डेटा रिलेटेड टास्क और कोई भी रिलेटेड लाइक विजुअलाइजेशन और क्लीनिंग, कोई भी रिलेटेड टास्क है डेटा रिलेटेड, वी कैन परफॉर्म easily by using Python and Python libraries. So in simple word, Python is a language that allows humans to easily communicate instruction to computers. So we can give the instruction to the computer what we want to perform. This is the easy to like Python. What is the key features of Python? इजी इंग्लिश लाइक सिंटेक्स, लाइक जैसा कि इंग्लिश से आपने पढ़ा होगा उसी प्रकार का थोड़ा सिमिलर सिंटेक्स पाइथन का भी होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है. इफ़ वी कंपेयर पाइथन विद अदर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा, देन वी गेट लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज इन दी सी प्लस प्लस एंड जावा वी हैव टू टेक केयर अबाउट semicolon colon, like if you want to print anything, then we need to like, this is the example of Python. So we can print whatever we want to print, like we simply write print, and inside the print function we write string like hello AI engineer. One in the C plus plus and Java and C, we can't write like this. So in the C plus plus we need to like C out, and then some colon also there, like we can draw here what we write, like in the C plus plus C we write it like this, then we write C out like this in the function, and semicolon also put in the C plus plus termination code. So this is the syntax of the C plus plus and Java. So these are the things in the C plus plus and Java, but in Python there is no thing. You can simply write and we can perform our task. So this is easy to use Python. Now no need to compile like interpreted it, no need to compile, like it is directly run. Like in the C plus plus we have to compile first before running, and if we get any error then compile will tell us this is the error, code will not run. After completion the compile it code will run in the C plus plus and Java or another language. But in the Python one line by line code will run. So this is the thing
cross-platform support like Windows. uh, Python is supported in the Windows related system, Mac related system, and Linux operating system. So Python support lot of operating system, and open source and free, बिल्कुल open source है, free है, यानी ह्यूज लाइब्रेरीज इकोसिस्टम है। पाइथन के पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी है जो कि डेटा साइंस और एआई के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, जो कि काम में यूज होती है। दिस इज द सिंपल एग्जांपल आई टोल्ड यू। Print, simply we write the print and then enter in the function like hello AI engineer, and then it simply return output hello AI engineer. So this is the simplest example. Like we will run in the code, we will run these in coding, but this is the one example for your like reference how easy it's Python. And why Python is used for AI and data science? So Python is used because AI works with huge data. Because in the data science or AI field, we have large amount of data, and AI works with huge data. And Python has ready-made library. Like I told you, Python has lot of library, huge library that works with data in easy way. So this is the benefit of the Python. Then faster development is less code, and development fast हो जाता है और less code लिखना पड़ता है। and strong community and industry support, बहुत ज़्यादा strong community और industry support रहता है पाइथन में, और lot of industry are using python. And what are the popular python libraries for ai? AI के लिए पॉपुलर लाइब्रेरीज क्या हैं? लाइक numpy. numpy मीन्स न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल कम जो भी परफॉर्म करना पड़ता है टास्क, वो उसमें numpy में किया सकता है। pandas, pandas is data handling, for handling the data we are using the pandas. And matplotlib c1, these are the libraries for using for what visualization, like visual graph chart. I will tell you each and every library with details, but today this is a like a demo, what are the libraries we are using and which purpose we are using libraries. So scikit-learn is using machine learning. Like in the machine learning we have a lot of algorithm or techniques, so we are using, and we are using these. And scikit-learn consist these those algorithm like module, built-in module. Then we import the module in by using scikit-learn, and then we get the output whatever we are applying. And TensorFlow and PyTorch, that is using deep learning. Deep learning is very important for in like in the context of neural network. When we have a complex problem, then we use deep learning. Then LangChain. Nowadays, LangChain is very useful because LLM and generative AI apps are using LangChain library. So this is very useful nowadays. Then what is data science? What is data science? Data science क्या है? Definition: data science is the process of collecting. तो डेटा साइंस एक प्रोसेस है जिसमें अपन कलेक्ट करते हैं क्या, डेटा। देन क्लीनिंग, क्लीन करते हैं डेटा को, पहले अपन ने रॉ डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसको क्लीन किया। देन वी एनालाइज द डेटा, देन में अपन एनालिसिस करते हैं जिसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, और डेटा एनालिटिक्स का पार्ट होता है एनालाइज करना। एंड देन इंटरप्रिटिंग डेटा, देन वी विल like apply the machine learning technique, and then we will predict the whatever we are applying like model or analyzing. So we will predict the future value by using a lot of technique used related to machine learning. So we will define, we will differentiate which type of problem we had, then we will divide those problem into like whatever machine learning technique like classification, regression, or supervised and supervised. So we will discuss in detail. So to make decision, so decision लेने के लिए अपन यूज़ करते हैं। एंड डेटा साइंस आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट हैपन, व्हाट डिड हैपन, एंड व्हाट विल हैपन। डेटा एनालिसिस का अप्रोच करके हम लाइक अपन पता कर सकते हैं पास्ट में किस प्रकार से डेटा लाइक एक दूसरे से रिलेट करता था। But using the data science we will predict also, like in future what will be the value, what will be the insight of the data, then we will predict by using the data science. And this is the data science flow. Like data, we will collect the data, then we clean the data, then we analyze the data, then we visualize the data,
So whatever insight we get in the visualization, then we will show the insights, then we will take the decision by using these insights. So this is the example of data science. So what is the real world example of data science? So this is the one real world example, like Amazon और फ्लिपकार्ट क्या होता है, कलेक्ट्स यूज़र क्लिक्स एंड सर्च एंड परचेस। लाइक कोई यूज़र है, उसने क्लिक किया या कोई सर्च की या कोई परचेस किया आइटम, देन क्लीन्स डेटा, रिमूव नॉइस। फिर उसमें वो डेटा को रिमूव करते हैं, लाइक यदि कोई यूज़र पर्टिकुलर ऑथेंटिकेट नहीं है, किस प्रकार के यूज़र हैं, कौन सा रीजन है, क्या है, सब कुछ एनालाइज करते हैं। फिर एनालाइज बाइंग बिहेवियर, लाइक वो सीजनल बिहेवियर या जो भी कस्टमर का या जो यूज़र का बिहेवियर एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार के प्रोडक्ट वो लोग खरीद रहे हैं, और कौन कौन सी जगह है, कैसी लोकेशन है, महंगा है, सस्ता है, सब कुछ एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग डेटा। देन वी प्रिडिक्ट व्हाट यूज़र मे बाय नेक्स्ट। देन उसके एनालिसिस के बेस पे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि इन द फ्यूचर व्हाट विल बी द यूज़र वाई most of the things, so they can improve their business. Then so recommended product, like then they apply the recommendation system, like what will be the future products. So they analyze earlier, so earlier data, so they will improve their business by using these, techniques. These are the machine learning technique, like recommendation system. So these recommendation system by developed by the unsupervised machine learning type. Now, then next move the like role of the Python in data science. So what is the role of the Python in data science? So Python is used at every stage. Python का हर जगह यूज होता है भाई, स्टेज और Python का यूज। लाइक डेटा कलेक्शन, अपन API के द्वारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कोई भी वेबसाइट है, उसकी API है, उससे अपन डेटा फैच करेंगे, जिसको वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। लाइक we have a lot of functionality, lot of method also for web scraping. Like we can use, like by using request method in the Python, HTTP रिक्वेस्ट एंड गेट पुट डेटा होता है ना, वो उससे कर सकते हैं। एंड ब्यूटीफुल सूप भी अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर स्क्रैपिंग द डेटा। देन प्ले राइट भी एक वो टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है वेब स्क्रैपिंग के लिए। देन सेलेनियम आल्सो यूजिंग फॉर वेब स्क्रैपिंग फाइल्स। देन डेटा क्लीनिंग के लिए अपन पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जिसमें डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लाइक डिलीट, ऐड और कन्वर्ट किया जा सकता है। देन एनालिसिस के लिए नंपाई लाइक स्टैटिक्स एनालिसिस लगाना है, जो भी स्टैटिकल एनालिसिस का यूज़ करना है उसके लिए अपन नंपाई यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ नंपाई। लाइक मीन, मीडियन, मोड, व्हाट इज़ द डिस्क्राइब व्हाट इज वेरी यूजफुल function in the statics. Then we can know about the skewness also, this data is skewed or not. If we want to categorical data like count, how much each value is count, frequency, what is the frequency of the each value or repeated, like mean and mode, and outlier. Lot of concept in these statics we will cover in the statics topic. Then visualization we can use matplotlib and c1, I told you earlier. So in the visual form we can perform our data in the visual form. Then ML models, what are the we have more ML models, like, so we can perform by using the scikit-learn. This is the library of the Python. So this is the Python use. Then AI apps, AI related apps, like जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऐप बनाए जा रहे हैं उसमें टेंसर फ्लो, LLMs का यूज हो रहा है। लाइक लैंग चेन, लैंग ग्राफ जो कि एजेंट बनाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। सो ये भी यूज़ हैं जो कि पाइथन की ही लाइब्रेरी है सारी। So here we use the Python and data science are used. IT कंपनीज, जो भी कंपनीज हैं IT रिलेटेड, वो सभी लोग कंपनी यूज़ कर रही हैं पाइथन और डेटा साइंस का। देन स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप है, मिड साइज स्टार्टअप, बिग स्टार्टअप, वो सभी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में भी यूज़ किया है, लाइक फ्रॉड डिटेक्शन, like customer behavior analysis, customer churn analysis. We are using Python and data science techniques only. Then हेल्थ केयर में जो भी डिसीज़ है उसको एनालिसिस करने के लिए, उसको डायग्नोसिस के एनालिसिस करने के लिए अपन हेल्थ केयर सेक्टर में भी पाइथन, डेटा साइंस और AI के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। देन ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक Amazon, Flipkart, these are the e-commerce website and we are using lot of
lot of recommendation system and association rule in these sectors. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी इनका यूज हो रहा है, पाइथन और डेटा साइंस और एआई टेक्नोलॉजी का. एआई एंड जेन एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, recommendation engine, earlier told you. So this is the day two video and day two content. I will give you, I will share you in the description box, so you can find out and you can download these notes and you can study, because this is the like a one example, like overview about the Python or data science. So this is the fundamental of the Python data science. There are a lot of concept, there are a lot of library, but we will cover day by day, so don't be afraid. We will cover. Okay, so that's all for today. We will meet in day three, that how to use like VS Code, Jupyter Notebook, and Google Colab, and then we will download these coding platform, and what are these and how we can use these. So I will tell you. Okay, thank you for today's video.